been 1825 days since I saw that past result on my screen, and life has never been same उसके बाद से ही. I am extremely grateful to my degree, to my mother body, ICAI, to my family, my friends, and all those teachers, mentors, and all those people who have supported me in this journey. And उनकी वजह से ही मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ. Hi everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Tanvi Sukhija and I am on a mission to help students and freshers to launch their career in the professional world by rising from mediocrity to आज मैंने 5 years complete कर लिए हैं CA बने हुए, and the CA prefix gives you next level respect. वो तो सबको पता ही है, but I will tell you 5 things which I have learned during these 5 years and which helped me stay relevant, which helped me grow, which helped me move out of my comfort zone, and most importantly were very, very important for my success during these 5 years. These are the things which I wish I knew sooner, so I'm doing my bit of sharing these 5 things with you so that you can take benefit of it. Number 1 thing, आपने CA डिग्री ले ली है, well and good, now you have the degree. Next thing you have to do is focus on your communication. When you focus on your communication, you can present your ideas अच्छे से in front of everyone, and that is why it is very important to focus on your communication, because if you can't communicate your thoughts, if you can't communicate your knowledge, if you can't communicate your ideas, then your knowledge is a waste, because you are not showcasing what you have inside you. That is why it is very important to have amazing communication skills. Number 2, emotional intelligence, EQ. We all will have certain situations when we are going to be pressured with tight deadlines, a lot of deliverables, a lot of work-life imbalance, and everything. The only good thing that you have to do during this phase is be emotionally intelligent. Do not let these deadlines come onto you, come onto your health, or come in your way of delivering a certain thing in a particular way. So अगर वो सब चीज़ें आपको अफेक्ट कर रही है, आपका डिलीवरेबल अफेक्ट हो रहा है, आपकी हेल्थ अफेक्ट हो रही है, आपका रिजल्ट अफेक्ट हो रहा है, so you have to learn how you should not let these things affect you. Number 3, technology. With an evolution in AI, you have to be tech savvy. You should know how to use AI in your work. You should know how to effectively use ChatGPT, Gemini, और जो भी AI tools होते हैं, you should definitely know, and you should know how you can interpret these tools, incorporate these tools in your work, so that आपका work और अच्छा हो जाए, आपका work efficient हो जाए, आपका work fast track हो जाए, and this will help you grow. लोग कहते हैं कि AI आ गया अब हमारी जॉब चली जाएगी. बिल्कुल ऐसा नहीं होगा. जो बंदा AI को अच्छे से यूज कर पाएगा उसकी आगे ज्यादा डिमांड होगी, ना कि जो ऐसा सोचेगा कि AI आ गया अब तो हमारी जॉब चलेगी. AI एट द एंड है तो टेक्नोलॉजी ना, इट would need humans to comprehend that technology in their work. So that is why it is very important that you should remain tech savvy, you should learn AI, you should be technically very sound in technology. Number 4 is networking. Meet as many people as you can. अगर आप ऑफिस जाते हो, रोज एक नए बंदे से बात करो, उनसे जान पहचान करो. अगर ऑफिस में ये सब हो गया, then you can move on to the social media platforms like LinkedIn or Twitter and make new connection, have a conversation with them. ऐसा नहीं है कि आप बस connection request भेजो, that's it, हो गया. Just connect with people, engage with their content, engage with their ideas, and put forward your point. So this networking will help you grow. This networking will help you get a lot of referrals. You never know आपकी next opportunity आपको कहाँ से मिल जाए. So that is why it is very important कि आप अपना network बढ़ाते जाओ, because you never know कि आपको कहाँ से opportunity आ जाए, and you just have to grab that opportunity. You can't miss on that opportunity. And last and the most important thing is adaptability. आपको अपने आप को अडेप्ट करना आना चाहिए इन ईच एंड एवरी चेंजिंग एनवायरनमेंट. ऐसा मत सोचो कि मैं अभी इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, आई डोंट वांट टू मूव टू अदर टीम, आई डोंट वांट टू मूव टू अदर ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज मैं अभी कंफर्ट जोन में हूँ, तो मैं यहाँ पे खुश हूँ, मैं यहाँ पे सेटल हूँ, सब काम मेरी मर्जी से ही चल रहा है, सब काम मुझे आता है, आई जस्ट हैव टू कीप ऑन डूइंग द सेम वर्क अगेन एंड अगेन.
डोंट थिंक दैट वे. इवन इफ यू आर वर्किंग इन सेम ऑर्गेनाइजेशन, आपको नया काम सीखते रहना चाहिए. दैट न्यू वर्क विल हेल्प यू generate more ideas, be more productive, be more technically sound, be more knowledgeable. So that is why it is very important for you to adapt into new culture. Don't be afraid of new things. अगर आपको डर लग रहा है ना, तो आप कभी अपने कंफर्ट जोन से निकल ही नहीं पाओगे, एंड जब तक आप कंफर्ट जोन से नहीं निकलोगे आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी. So that is why it is very very important to move out of your comfort zone. It will be very difficult for 1 or 2 months at the maximum, बट उसके बाद आपको पता चलेगा हाँ कि ये मेरी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है. हाउ दिस हैज़ बेनिफिटेड मी इन माई ग्रोथ. That is why it is very important to adapt to new culture, new technology, new people, new environment, because it is going to help you overall in shaping up your personality, in shaping up your confidence, in shaping up your knowledge, and in your overall growth. That is why it is very important to do that. And one bonus tip for all the people out there, फोकस ऑन योर पर्सनल ब्रांडिंग. अगर आपकी जॉब आज आपसे छिन गई, ऐसा ना हो भगवान जी करे, बट इन केस अगर आपकी जॉब आपसे छिन गई, तो हु आर यू अदर देन योर जॉब? व्हाट विल यू टेल यू कि आप यहाँ जॉब करते हो, आप अपनी डिस्क्रिप्शन यही देते हो. बट इफ यू फोकस ऑन योर पर्सनल ब्रांड, इफ यू फोकस ऑन योर ब्रांडिंग, then you can tell other than job, this is all I do, and this is what my interest areas are, and what all I am doing to increase my knowledge or focus on building my personality in such a way कि मैं expert बन चुका हूँ इस चीज़ का, या मैं expert बन चुकी हूँ इस चीज़ की. That is why it is very important to have a personal brand. आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस कैसी है, आप सोशल मीडिया पे कैसे प्रेजेंट हो, आप अपने आपको सोशल मीडिया पे कैसे प्रेजेंट करते हो, एंड व्हाट ऑल यू डू अदर देन योर वर्क. जो आपने अपना ऑफिस में भी अदर देन योर BAU, विच आई ऑलवेज से, जो आपका बिजनेस एज यूजुअल एक्टिविटीज़ हैं जो आप करते हो अपने काम की, उसके अलावा आप क्या करते हो, दैट्स हु यू आर. काम तो सभी करते हैं, बट लोग किसको जानते हैं? जो अपने काम के अलावा भी कुछ करे. अगर जो आप अपना काम कर रहे हो, तो आपकी सिर्फ टीम में ही आइडेंटिटी है, राइट? दूसरी टीम को आपके बारे में कैसे पता चलेगा? अगर आप किसी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हो, दे माइट सी यू समवेयर. If you are networking with them, they might see you somewhere. So that is why it is very important to build your brand, build your identity separate to your job. If you have the same interest area, start posting on that topic. आप अपनी नॉलेज शेयर करोगे सोशल मीडिया पे, 3-4 नए लोग आपसे जुड़ेंगे एंड आपके बारे में जानेंगे, विच इज़ अ विन-विन सिचुएशन फॉर यू. एंड आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी इफ़ यू आर शेयरिंग द कंटेंट विच यू ऑलरेडी पोजेस. सो दैट इज़ वाई आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी तो आप देख भी रहे होगे, everyone is focusing on personal branding. So that is why it is very important to build a brand for you. And I am extremely grateful for these 5 years. I can't express my gratitude to you all. And thank you so much for supporting me in this journey. Thank you so much for supporting me on YouTube. And if you have any questions, type that down in the comment section. I will answer all of you. And if you want anything specific, do let me know in the comment section. I will try to cover that in my upcoming videos. Thank you so much for watching this video. Thank you for watching the video. Please give it a thumbs up and share it with your friends so that it may benefit them as well. In case you have any questions, you can reach out to me through Instagram, LinkedIn, or you may join my Telegram community. Do not forget to mention your biggest takeaway from this video in the comment section below.